Baroda. Sauce. Cheese with sauce. Photo position. मैं नीचे बैठ जाता हूँ। अधिकारीगण, प्रशिक्षक स्टाफ एवं समस्त एनसीसी कैडेट्स की ओर से आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मिस गीता राव के साथ विशिष्ट अतिथि वीर पिता श्री वल्लभ भाई रमानी एवं वीर माता श्रीमती गीता बहन रमानी का सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगणों का एनसीसी के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का एनसीसी के प्रांगण में स्वागत है। हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था। राष्ट्र ने अतीत के कटु अनुभवों का सामना किया और मात्र 75 वर्षों के सीमित समय में देश को न केवल आर्थिक रूप से विकसित किया बल्कि मजबूत वैश्विक नेतृत्व के रूप में महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करने की ओर आगे ले जाने में क्षमता हासिल कर रहा है। देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के एक बहुत अहम बात यह है कि विकास की यात्रा को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए और उससे भी अधिक आवश्यक है कि विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण जनमानस का विश्वास होना। परिवर्तन और विकास का यह संदेश विश्व के सबसे बड़े वर्धिधारी युवा संगठन एनसीसी के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाता है, तो यहाँ जमीनी स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के साथ उनके विश्वास को मजबूत करने वाला होगा, जो किसी भी मामले में सकारात्मकता की उम्मीद करते हैं। हम सब एनसीसी कैडेट इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। एनसीसी महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाने की दिशा में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसी उद्देश्य के साथ एनसीसी की बालिका कैडेट्स के द्वारा कन्याकुमारी से शुरू होकर दिल्ली तक एक साइकिल महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा युवा शक्ति को भारत के विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा सके। अब मैं इसी साइक्लिथॉन के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए साइक्लिथॉन में भाग ले रही एनसीसी की बालिका कैडेट सार्जेंट रिद्धि नायकर फ्रॉम 1 गुजरात सीपीसी एनसीसी अहमदाबाद को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Jai Hind. I, Corporal Riddhi Naikar from Gujarat Directorate, would firstly like to extend an heartfelt gratitude for your presence among us. On 8 December 2023, we undertook a challenge, the Mega Cyclothon, conducted by 13 SW cadets, who will be covering a total of 3,232 kilometers in 37 riding days and an average of 97 kilometers per day. We started off from Kanyakumari and will be flagged at Delhi by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Our slogan for the Mega Cyclothon is Mahila Shakti Ka Abhedya Safar. As we all know, India has combated its past burdens resiliently for 75 years and has emerged as an economic giant
and responsible global leader. One of the biggest catalysts that would aid the continuity story of this growth is to make it known to its youth and make them believe in their capability of carrying it forward. Everyone, though our society may not acknowledge the fact, but the reality is women are the equal contributors towards the growth of India. These are very visible from the pictures of Chandrayaan-3 and the Asian Games. NCC, an important instrument that has been working towards the empowerment of women. So this mega cyclothon dedicated towards the women of India and will prove it's an asylum Mahila Shakti. In our remarkable journey, we traverse through the diverse landscape of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Goa, and reached Gujarat on 31st December 2023 and will travel through Gujarat, Rajasthan, and Haryana, witnessing the rich cultural tapestry of our nation. Along the way, we explored significant landmarks such as INA, the Indian Naval Academy, NDA, the National Defence Academy Khadakwasla, the Maratha Light Infantry, Karwar Base, Karwar Naval Base, and the Commander Training School. And we were privileged enough to witness the insides of a submarine and the aircraft carrier INS Vikramaditya. As we paddled through this incredible odyssey, the cultural diversity, the warm and welcoming faces we encountered, it's a fact that India's unity is in its diversity. This mega cyclothon not only tested our physical endurance, but pushed us beyond our mental barriers, boosting our confidence to new heights. We are very excited and seek your blessings for the journey ahead. Thank you and Jai Hind. It's my privilege to stand before such a gathering here. One of the prominent cyclists of India is here, and to speak about cycling in her presence, thoda, as we say in Hindi, chota muh badi baat hai. So I'll not speak about the journey of cycling, but I'll take this opportunity to narrate a story of a cyclist which brings out a lot of life lessons for us. You know, it's about 3.5 years ago, and a cyclist was hit by a truck. And when he was lying down, he was, as usual, expecting somebody else to come and help him, which never came. And that's the time when half of us in that position would start to worry and give up. But in the instant case, possibly he decided that he should gather his wits and start to act on his own. So the first lesson which I bring out in this story is that we should maintain our composure in adversity. And then, of course, he introduced himself to the people, asked someone to fetch an ambulance, call the police, got his phone located and gave a call to somebody else, a colleague of his, to get things moving. Eventually, he also asked somebody to find a stick and tie his leg, because why the people were actually not helping was because his right leg was broken, and when I say broken, it actually meant it was broken like this. Eventually, when the police came, they were doing a little dilly-dallying in the sense that they were not wanting to carry him along. So he had to request them once again. And for the second time, when the policeman said that we are still waiting for an army ambulance, he started to fight with them. So the second lesson is, it is good to take calculated risks once in a while, because you are in a losing position. बात बनेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं बनेगी तो भी कोई बात नहीं. So that was the second lesson which I want to highlight here. Eventually, he was lifted to the hospital. The hospital people took good care of him. He underwent multiple surgeries. And after about the total account of injuries amounted to the fracture of that leg, which I was mentioning. We have our pelvis. You've all seen there are 4 bones in the pelvis. So all these 4 bones were broken at about 14 places. But they were not the serious injuries. The more severe injuries were actually the rupture of the small intestine, the large intestine, and the urinary bladder. So it's about 4 days after his accident that the doctors said that you will now be able to survive. And another 19 days later, he underwent another set of surgeries. And that's the time when the doctor said that you will possibly be able to walk on crutches on your life. And that's the day this gentleman decided, in fact, he announced that 1 year from the date of my accident, I will cycle. Obviously, this is determination.
And eventually, as we move forward, this man progressed about 4 months in the bed, and after spending 4 months in the bed, he started to work, and that is the example for the resilience, the human spirit. And about 6 months later, he started getting on the crutches. About 7 months later, he left the crutches and he started to walk on his own feet. And 1 year later, he fulfilled his promise that he will be able to cycle. And now he is fit, hale and hearty, and he moves around happily. So the large points that I make in this entire story is never give up in adversity. Second, keep your head. Third, the capacity of a human body to endure pain, physical hardship is endless. It is actually we who give up in our mind. So if we remain strong in our mind, I am sure we are able to do everything. And you all heard the story of Geeta sitting right here. Challenges are here not to break us. Challenges are here to make us and make us stronger and to carry us forward. You have a living example right here. And before I end, in fact, I'll make an exception of requesting you to give a large round of applause for Geeta, my old friend, in fact, and she's the one from whom I draw a lot. And before I finish, on behalf of the cycling team, the other presentations will be done by the ADG, but I'll request the group commander, Ahmedabad, and the CEO of the battalion, who's taking good care of us, to accept our mementos. The others, of course, the ADG will. Everyone, this is the customary memento. It says Mahila Shakti ka abhedya safar. And when we were moving in, ma'am was asking me, aapko bad weather mila ki nahi mila? And I only told her that on the second day we started in rain. Because I said to my team, I said agar safar abhedya hai, to fir wo kisi bhi tarah se rukega nahi. And we started. There is a lovely video of it. If you find an opportunity, please see. In fact, I'll invite you to visit our site and have a look. There are some interesting pictures and some interesting videos. And thank you. Thank you, sir. जय हिंद एवरीवन। जय हिंद मैम। थोड़ा जोर से आवाज दो। Good. Thank you so much. First of all, heartiest congratulations to all these 13 wonderful rocking women for riding from Kanyakumari and heading towards Delhi. And so far you are almost finished your ride. एंड जब कर्नल चिराग सर साथ में हैं, ब्रिगेडियर चिराग सर साथ में हैं, तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. ही हिमसेल्फ इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन राइडिंग अलोंग विथ यू ऑल. ओके, सो बाकी सब मोटा मोटा तो सर ने बता ही दिया होगा. आई विल, सिंस यू आर राइडिंग फ्रॉम कश्मीर कन्याकुमारी टू दिल्ली, आई वुड स्पीक द स्टोरी अबाउट माई कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड. कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड करने का डिसीजन मैंने तब लिया जब मैं अपना 600 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर राइड करने में फेल हुई थी. तो मैंने बोला अब दोनों को छोड़ो, इससे कुछ डबल करो. डबल से भी अब कोई ऐसा इवेंट तो था नहीं कि इससे डबल हो जाए. तो देयर वाज एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैम्पियनशिप, फर्स्ट टाइम कमिंग अप इन इंडिया in March 2023. So I decided to attempt it, and that time there were a lot of pro women in India were there and who were approached to attempt on it, but everybody refused because of the distance and passing from Kashmir to Kanyakumari. You have to pass through a lot of different continents of India and face multiple weather conditions. So most of all women refused.
So when I decided to attempt it, I got a lot of calls to drop off the event. But it's my rule that once I decide, there is everything come in between is a process. I take everything as a process, and I started it from Kanyakumari. The very first day, I was passing through some hilly region after 7 to 8 hours of my ride, and I faced a very dark mountainous region where there were no road. Completely, it's a Kashmir region, and I had a fall where my cycle derailleur broken, and I had some injury in my working leg knee. So I had no option but to quit the ride. Fortunately, I was keeping secondary bike with me. I always do that. I keep 2 bikes because falling is my nature, but I am very well expert enough to rise and move forward. So I started riding my secondary bike, and I completed the ride up to Delhi then. And after reaching Gwalior, I started facing one more challenge of getting my active leg inactive. So from there, my complete ride strategy had changed. I had plans of riding 300 kilometers per day, but from there I had only 2 options. When my leg was active, I had to ride, and when my leg was deactive, I had to rest. Not rest in the terms we have to rub my leg, we have to activate my leg, and the moment it gets activated, we immediately need to start riding. Otherwise, it will again get deactivated. So that's how we started riding. And after reaching near Bangalore, we mostly used a car heater to heat myself and provide enough, maintain my body temperature and get my leg activated. But after reaching Bangalore, even car heater, weather, and nothing could work. So we started collecting the dry grasses from the surrounding areas in our car. And the moment my leg get deactivated, we used to burn a big fire, and I will sit inside the fire, that fire area, and people will start rubbing my legs, both legs, and that's how we used to continue our ride. And after reaching Gwalior, when I had a very bad physical condition, the organizer sent an ambulance for me. So there, one doctor checked me up and said that you don't have to ride. You are not allowed to ride for next 2-3 days because your physical condition is like that. So we won't allowing you. So I said, whatever you want to do, you do, but I'm going to ride. There is no way, stopping me. So they said, if you will start from here, we will inform your organizer and they will take the necessary actions. And I'm smart enough to convincing people even because I have to face a lot of such challenges in my life. So I instead of those people talking to organizer, I called up them and said that it would be better if you will allow me and support me because it's my physical condition. I have this physical condition since my childhood and I faced it. I know well that how to deal with it. So it's better you people support me, or else I will quit right here this moment and I will finish Kanyakumari right by my own. And that's what I already have decided. There is nothing come in between. So better being an organizer, you support me, and they supported me. And they said that they will send one this ambulance and doctor with me, but I denied for that even, and I continued this ride. And after Bangalore, my upper body also started reacting weirdly.
धन्यवाद। अब मैं श्रीमती कार्तिका रमेश से अनुरोध करती हूँ कि वे वीर माता श्रीमती गीता बहन जमानी को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। Anyone? Any guests other than this riding height? No? No ladies? It's nothing but Brigadier Chirag himself. Ladies and gentlemen, give him a applause. You continue to inspire everybody, and especially those 14 sounds you are carrying. We will really transform. Thank you so much. Please thank you. धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बुलाया। यहाँ पे बैठे हुए तमाम कैडेट्स, गर्ल्स कैडेट्स, बॉयज कैडेट्स, आज का ये फंक्शन जो हुआ है मेगा साइक्लोथॉन 3,232 किलोमीटर्स, 37 साइकिलिंग डेज, हमारी गुजरात की बहादुर गर्ल्स कैडेट्स जो कि अधिकतर बड़ोड़ा और सूरत के हैं, ब्रिगेडियर नरेंद्र चिराग सेना मेडल, उनके देखरेख में, उनके लीडरशिप में आप लोग इतना तगड़ा काम कर रहे हैं। आज का इतना बढ़िया फंक्शन, आप सब कैडेट्स यहाँ जो पीछे भी बैठे हैं, आप सबके कारण ये इतना बढ़िया फंक्शन हो पाया है। मैं खासकर हमारे जनरल साहब मेजर जनरल रमेश शानमुगम, उनकी तरफ से यहाँ पे जो मीडिया पर्सन्स आए हैं और यहाँ पे जो एनसीसी डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, ग्रुप हेडक्वार्टर अहमदाबाद उनके जो अधिकारी हैं, और यहाँ पे जो तमाम परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स और सिविल स्टाफ जिनकी देखरेख में ये फंक्शन ऑर्गेनाइज हो पाया, और ये साइकिल रैली जो चल रही है, जो कि 2/3 अपना जर्नी खत्म कर चुकी है, 1/3 रह गया है। इन्होंने दिल्ली तक जाना है और वहाँ पे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे भी मिलेंगे। ये अपने रास्ते पे हैं, और इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है कि परसों ये हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल गवर्नर गुजरात के उनसे भी मिलेंगे। तो आप सबको, जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया कि ब्रिगेडियर नरेंद्र साहब ने एक कहानी बताई कि एक एक्सीडेंट हुआ और एक जो भी पर्सन थे उनकी क्या कंडीशन थी हॉस्पिटल में, और आज वो आपके सामने यहाँ खड़े थे और आपको स्पीच देके चले गए। और जनरल साहब ने बताया कि वो कहानी ब्रिगेडियर नरेंद्र चिराग की थी। आपके सामने ये ब्रेव लड़कियां यहाँ पर हैं, हम में से एक हैं, गुजराती छे, एने बदा कन्याकुमारी की साइकिल चलावे छे अने ए दिल्ली जाए छे। मेरी गुजराती ठीक है? सरस छे ने? तो પછી તમને एक और बात बताता हूं कि मेजर ऋषिकेश सैनिक स्कूल बालाचड़ी हमारे गुजरात के कुपवाड़ा, मैं कुपवाड़ा जानता हूं क्योंकि मैं भी वहां तैनात था। वहां पे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस आसान नहीं होते हैं। वहां पे उन्होंने वीर गति प्राप्त की। वह एक एनसीसी कैडेट थे। उनके पिताजी जो हमारे सामने यहाँ बैठे थे और हैं, जिनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा, वह एक एनसीसी कैडेट रहे हुए यही गुजरात में। इससे आप लोग को अच्छा लगता है? yes, तो आप समझ सकते हैं कि तमे કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ एनसीसी માં તમે ભાગ લો છો, તો કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ તમે કરી શકો છો। પ્રધાનમંત્રી પણ એનસીसी कैडेट હતા, ખબર છે ને? तो પછી એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ चीज है। गीता मैडम को हमने सुना। गीता मैडम ने आपको एक नारी शक्ति के बारे में एक मिसाल दिखाया है। तो दिकरा ने दिकरी, बेटा ने बेटी, कैडेट्स, अगर आपने दिल में ठान लिया तो आपके सामने मिसाल है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भाई बात सही है? yes,
पक्का? यस सर। तो एक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ब्रिगेडियर नाथ, ग्रुप हेडक्वार्टर अहमदाबाद, हमारे जनरल साहब जो कि मेजर जनरल रमेश शानमुगाम, उनके बिहाफ पे हम सब एनसीसी के कैडेट्स एक बार खड़े हो जाएं। और जो अब हम धन्यवाद करेंगे जो आप सब हमारे पास आए हैं। मेजर रमानी के पेरेंट्स यहाँ हमारे पास आए हैं, गीता मैम सर, आई मीन एंड नरेंद्र सर, आप सब के लिए एक धन्यवाद बनता है। एनसीसी में आप कैसे धन्यवाद करेंगे? एनसीसी सॉन्ग बाद में होगा, अभी हम क्या करेंगे? एनसीसी क्लैपिंग, स्काउट वाली जो क्लैपिंग है, तो अभी एक तगड़ी क्लैपिंग चाहिए और धन्यवाद करें। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। आई सीनियर अंडर ऑफिसर उषा माली फ्रॉम गुजरात। आज़ादी के पहले 75 वर्षों में चुनौतीपूर्ण कार्य करते हुए हमारा देश एक आर्थिक शक्ति और जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभर के आया है। समाज का एक वर्ग महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता, परंतु सच्चाई यह है कि देश की तरक्की में महिलाएं भी बराबर की भागीदार बनी है। इसका प्रमाण हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 और हाल ही में संपूर्ण हुए एशियंस गेम में देखा गया है। एनसीसी एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली, कन्याकुमारी से शुरू हुई यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैगिंग की जाएगी। 32 दिन में 3232 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। प्रतिदिन लगभग 97 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रवेशित हुए। हमारे अब तक के सफ़र में हमें 2400 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। हमारे आगे के सफ़र में हम उदयपुर, अजमेर, जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रवेश करेंगे। ये सफ़र ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हमें ये अनुभव जीवन भर याद रहेगा। थैंक यू। क्या चैलेंज आप फेस किया? चैलेंज सर, एक्चुअली आवर मोटो इज़ महिला शक्ति का अभेद्य सफ़र। हम प्रूफ कर रहे हैं कि महिलाएं ऑलरेडी शक्ति वाली है, उनमें कोई कमी नहीं है। बस हम अभेद्य सफ़र लेके चले, कुछ भी हो जाए। मतलब लाइक हम साउथ से चले आ रहे हैं तो वहाँ गर्मी होती है, अब ठंड बढ़ रही है, पंचर्स होते हैं रास्ते में और साइकिल्स भी ख़राब होती है, पर फिर भी हम चले आ रहे हैं, मतलब आगे बढ़े जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, हमने रुकना नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट।